Hello and welcome to all of you. Hit the subscribe button and bell icon if you think that these videos are beneficial for you. In this video we will discuss about the final accounts 2 paper 2011 question which is related to the final accounts. Now let's move to the question. Question is that Sohail and company have authorized capital of 10 lakh or divided into 1000 shares of 10 each. You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st December 2010. तो यहाँ पे सबसे पहले फेवरेबल बैलेंसेस को जैसे पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपको कि आपको काफ़ी सारी चीज़ वैसे ही यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पे इनकी प्रॉपर प्लेसमेंट होगी। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पे आपके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स और डायरेक्ट रेवेन्यू जो कि सेल्स से आपको मिलता है वो आप प्लेस करते हैं और उसके नतीजे में जो एड लेस करके या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो आपको होता है। और उसके बाद आप अगले स्टेप को मूव करते हैं और जो कि रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड के ऊपर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करने में, वो आप उसमें डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करते हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर जितने भी आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यूज हैं वो आप प्लेस करते हैं। उसके बाद थर्ड इसका स्टेप आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड के ऊपर आपके दो, अगर प्रीवियस प्रॉफिट गिवन है जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये देखें ये गिवन है, और करंट प्रॉफिट जो है ये दोनों आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। और उसके बाद आप डेबिट साइड के ऊपर प्रोपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको अवेलेबल हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वो आप प्लेस करते हैं। बैलेंस शीट की जहाँ तक बात है तो दो ही साइड्स होती हैं उसकी, लायबिलिटीज़ और एसेट्स। एसेट्स जो हैं वो आपके असासा जाते हैं, अगर यहाँ पे गिवन है तो आप एसेट साइड के ऊपर फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जबकि लायबिलिटी साइड के अंदर आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उसके बाद रिजर्व्स हैं, उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, फिर करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को प्रॉपर प्लेस करते हैं। तो ये आप जिस वक्त 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही आइडिया होना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या जी फिक्स्ड एसेट्स है। और ऑडिटर रेम्यूनरेशन, ऑडिटर को आप कोई पैसे पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेजेस ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड के ऊपर आएंगी। अगर रिटर्न्स हैं ये तो ये माइनस हो जाएंगी परचेजेस में से, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह सेल्स है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगी। अगर सेल्स रिटर्न है जैसे कि ये गिवन है, सेल्स रिटर्न्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ सेल्स एंड रिमेनिंग बैलेंस इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड योर करंट एसेट, so cash at bank is also your current asset, so these both figures must be placed on the asset side of the balance sheet under current assets. Furniture is your fixed asset. If depreciation is given then we place its value first. Depreciation must be subtracted from this value and remaining book value will be placed on the fixed asset side of the balance sheet. Sundry creditors is your liability, you will have to pay this amount. Sundry debtors is your assets, other people have to pay to you this amount, so this is asset for you. Manufacturing wages, it is your direct expense because these wages are directly involved in the manufacturing of the products, so it must be placed on the debit side of the trading account. एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आएगा।
स्टॉक ऑन 1/1/2010 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा ये. बैड डेट्स, there is the involvement of the formula when we calculate actual bad debts under profit and loss account debit side, and formula once again I am going to repeat that bad debts add write off if given, add new provision if given, less old provision, which is I think not given here, so we just old provision is not given, so इसको just हम छोड़ देंगे, just leave it. So bad debts, after that legal charges is your indirect expense, goodwill is your asset and it is your asset and it must be placed on the asset side of the balance sheet. Freehold property is your asset and it must be placed on the debit side of the balance sheet. Share capital must be placed on the, under authorized capital, issued subscribed capital of the liability side of the balance sheet. 6% debentures is your long-term liability. Bill receivable is your asset. Debenture interest, that is indirect expense for you and it must place on the debit side of the profit and loss account. Preliminary expenses, preliminary expenses इस क्वेश्चन में एक नई चीज आई है, ये आपकी डेफर्ड कॉस्ट है. और डेफर्ड कॉस्ट जो है अगर देखते हैं इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसके मुताबिक हम चलेंगे. तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद ये आ गया प्रीवियस प्रॉफिट 30,000. सो नाउ वी मूव टू द एडजस्टमेंट्स. डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10 and 5% रिस्पेक्टिवली. ये आ गया एडजस्टमेंट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की. राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो डेफर्ड कॉस्ट जो है ये एसेट साइड के ऊपर प्लेस होती है. यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 9,000, तो यहाँ पे कहा गया 1/3 राइट ऑफ कर दें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. तो इसका मतलब ये होगा कि हम 1/3 इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दैट इज 3,000 because 1/3 of 9,000 is 3,000 and remaining 6,000 will be placed under deferred cost. And after that provide a final dividend of 5%, take 5% dividend on share capital. What is share capital? This is share capital 400,000, take 5% and it must be placed on debit side of the profit and loss appropriation account and then it will be included under current liabilities. After that transfer rupees 8,000 to general reserve account, so 8,000 will be placed on the balance sheet under general reserve head in the liability side. Make a provision for income tax to the extent of rupees 20,000. It is your current liability. Once it is placed in the profit and loss appropriation account debit side, just like as we do normally in the case of dividend. Dividend is also placed on the profit and loss appropriation account debit side and under current liability side. Same, your provision for income tax is once it is placed in the debit side of the profit and loss appropriation account and same once again it is placed on the current liability side of the balance sheet. So closing stock on 31st December 2010 was valued rupees 100,000. So once closing stock one time it is placed on the credit side of the trading account with the sales and one time it is placed on the asset side of the balance sheet under current assets. So ये इसका solution था सारा. तो ये सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेजेस लेस रिटर्न्स remaining balance is this, sales less return remaining balance is this, and manufacturing wages, this is only direct expense for you 75,000. So remaining gross profit is 165,000. Now this gross profit is transferred to the profit and loss account credit side and all the indirect expenditures must be subtracted from this. So salaries is your indirect expense, auditor remuneration indirect expense,
preliminary expenses, write off 1/3 of 9,000, 3,000. Depreciation on furniture, which is 5%, value is 47,000, so 47,000 multiplied by 0.05, 2350. Depreciation plant and machinery, 295,000 multiplied by 0.10. Depreciation is 295,000. Insurance is your indirect expense. Bad debts, there is no write off, there is no new provision, there is no old provision, so we just place bad debt simply here. Legal charges is your indirect expense. Printing and stationery is your indirect expense. Debenture interest is 12,000, it is your expense, indirect expense. And after deduction of all these expenditures out of gross profit, your remaining net profit is 55650. Now we move to the third part. क्रेडिट साइड के ऊपर दो चीजें, एक करंट ईयर का प्रॉफिट 55650 जो कि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और एक प्रीवियस प्रॉफिट 100,000 जो कि आपका 55650, और जो आपका प्रीवियस प्रॉफिट है 30000 जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड के ऊपर these both profit will be placed. Now what we will deduct out of this amount 85650, we deduct provision for taxation which is given in the adjustment 20,000. If there is any transfer of general reserve, because it is asked in the question in adjustment that transfer 8,000 in general reserve, so we just transfer 8,000 in general reserve and propose dividend which is 5% on share capital, so 400,000 multiplied by 0.05, 20,000. Now these three values, once again it will be placed on the balance sheet. 8,000 will be placed on the general reserve, and 20,000 for proposed dividend and provision for taxation, it must be placed on the current liability side of the balance sheet. So now your profit is 37650. So these two values, general reserve and 37650, will be added here under the head of reserves. Authorized capital is 100,000, but issued and subscribed capital is 400,000. So we just take this value in the sum of this total. In the previous paper I already told you that don't include this authorized capital value in the total. We just place here for our own identification that what is the authorization of capital. So this capital, this value is authorized to issued and subscribed, but we only issued and subscribed this value. After that, debenture and long-term liabilities, as I told you earlier part in the video that 6% debentures, it is your long-term liability, so it is placed here. So under current liability, sundry creditors 255,000, provision for taxation 20,000, and proposed dividend 20,000 will be placed here. So total of liability side is 940,650. Now we move to the asset side under fixed assets. So what is the fixed assets? One is your furniture, one is your plant and machinery, one is your goodwill, and one is your freehold property. Under this, furniture less depreciation, 47,000 minus 2350 is 44650. Plant and machinery less depreciation 295,000 minus 29500, and remaining value is given. This goodwill is 60,000 and freehold property is 180,000. So goodwill is 60,000 and freehold property is 180,000. So after this, what is deferred cost? Deferred cost is preliminary expenses. So preliminary expenses, we already
1/3 of preliminary expenses are deducted now, which we placed in the profit and loss debit side. It is given here. So what is the remaining value is only 6,000. So 9,000 minus 3,000 is equals to 6,000. Now what is placed under current assets? So cash in hand, cash at bank, bill receivable, closing stock, sundry debtors. There is no new provision, there is no write-off, so we just simply place sundry debtors here. So all these are your current assets. And now asset side and balance side is now balance 940650, 940650, and that's the end of the question. So thank you. Soon I will come with the next paper questions, so just do practice on these questions, and when you will try or practice at least 10 to 15 questions, and somehow you will be trained in your final account. So thank you, stay blessed, stay safe, take care of yourself and take care of the persons around you. Thank you.